Pakistan Lost, Episode 3. Last week, a Hindu doctor was shot dead in Karachi. Just a day later, a Sikh businessman was shot dead in Peshawar. They were both gunned down by unknown assailants. Pakistan definitely has a tainted record when it comes to minority rights. Discrimination is societal, as well as institutionalized, and even by law in some cases. Although it is widely reported that Pakistan's minority population as a percentage of the total population has plummeted since 1947. It is correct that at the time of partition, Pakistan's non-Muslim population was 23%, and now it's around 3 to 4%. But the majority of Pakistan's non-Muslim population was in East Pakistan. West Pakistan's non-Muslim population has always been between 3 to 4%. But there's no denying that in the past few decades, Pakistan has seen thousands of non-Muslims leave Pakistan due to discrimination and violence. There's no genocide or mass eradication, but the use of Islamic identity as being interchangeable with the Pakistani identity means the white portion of the flag often feels shortchanged. They are often made to feel like second-grade citizens in their own homes. As the popular joke goes in Pakistan, danda bhi phir white portion mein hi jata hai jhande ke. Even politicians routinely throw them under the bus without fear of losing any populist support. गाय का यूरिन पीने वालों, हम मुसलमान हैं, जो चीज हम रखते हैं वो तुम नहीं रख सकते, बुतों को पूजने वालों, अबे तो मैं कोई यहूदी हूँ, मैं कोई हिंदू हूँ, जो मेरे मुंह पर नारा लगा रहा है. The ironic part in all of this is that the whole basis of making Pakistan was the need to protect the freedoms of a minority group. The whole idea of Pakistan stems from the fear that the Muslims would be subjugated and dominated by the Hindu majority. Hence, they need a separate nation where they can practice their faith freely and enjoy freedoms that they feel they would not otherwise have. In the fever of the partition movement, that spirit was somewhat lost. And in an attempt to charge up the masses for the idea of Pakistan, the whole concept of minority rights was reduced to Muslim nationalism, which, even when articulated in the best of ways, is somewhat inherently exclusionary. And that is how many people understood Pakistan. Pre-partition, how you were being told about the idea of Pakistan was often at the hands of your local clergymen. Someone who would have no qualms painting Quaid-e-Azam as someone with a 3-foot beard who would emancipate the region, impose Sharia law, and rid Pakistan of the infidels. You can't expect people fueled by such schemes to not resort to violence when the opportunity arises. A large part of what fueled violence towards Hindus and Sikhs in Punjab was the belief that Pakistan was going to be made for Muslims. Some people thought, why are Hindus and Sikhs living here? They should either leave or be killed because Pakistan is meant to be a homeland for Muslims. Even though it was never said that Pakistan was meant to be just for Muslims, that's unfortunately how some people understood it. The same idea on the other side of the border saw Muslims being lynched and killed. I do say a large part rather than the whole part because what never gets talked about is the economic aspect of it. An aspect beautifully encapsulated in Asghar Wajahat's play, Jinne Lahore ne vekhya o jammiya hi nahi. Against the backdrop of partition, many homes were raided, robbed and captured by people simply looking to make a profit. It was not hate, it was opportunism. This was the reality of partition for millions. It is hard to think about the ideals of minority rights when you see entire villages being burnt or trains arriving full of dead bodies. This isn't freedom. This is war. This is hell. All 9 circles of it. This is not what anyone wanted. This is not what anyone could have wanted. But how could this have been avoided? I believe the way to do it would have been to make the minority rights question central to the demand for a separate homeland as opposed to the Muslim question. And the way to do that would have been to join hands with the Sikh community. A separate homeland for Sikhs and Muslims would have made the central tenet of the demand a need to protect freedoms of religious minorities in India. It would have also meant a larger portion of Punjab being part of this separate homeland, which would have gone a long way towards addressing some of the asymmetry that we see between India and Pakistan when it comes to the resources. I know in 2023 this is no more than a hypothetical, but before you come after me with your pitchforks accusing me of going against the two-nation theory, the founder of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, had the same idea. There is a moment in history where we zigged when we could have zagged. And here is that moment.
I will end this episode with my discussion with Dr. Ishtiaq Ahmad on how a proposal was made to the Sikh community and why that never came to be. मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि अगर पाकिस्तान को बेहतर इन्विजन किया जाता कि इट्स अगेंस्ट रिलीजियस परसिक्यूशन, और हमेशा से मेरी एक थ्योरी थी, एक हाइपोथेटिकल, कि अगर हम सिखों को अपने साथ कर लेते तो बहुत बेहतर होता। ये आप ही की किताब पढ़कर, आपको ही सुनकर मुझे रियलाइज हुआ कि कायदे-आज़म ने भी यही सोचा था, और कायदे-आज़म ने भी सिखों को कहा था कि आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जो डिमांड्स हैं आपकी, मैं साइन कर दूंगा, आप हमारे साथ मिल जाएं। सो वुडंट यू सी कि ये खुद टू नेशन थ्योरी के खिलाफ जाता है, अगर कायदे-आज़म खुद कह रहे हैं कि सिखों को कि आप हमारे साथ मिल जाएं और साथ हम एक मुल्क बना लें। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। आई एम वेरी प्लीज कि आप इतने शार्प सवाल कर रहे हैं, क्योंकि जितना अच्छा इंटरव्यूअर होता है उतना ही कोशिश करनी पड़ती है मुनासिब जवाब देने। वो जब इतने अच्छे अजीम गेस्ट आते हैं ना तो मैं इंटिमिडेट हो जाता हूँ, तो मैंने आज पढ़कर आया हूँ इसी वजह से। नहीं, आप बिल्कुल इंटिमिडेट नहीं हुए, यू आर सो मच ऑन द डॉट, और बहुत मजा आ रहा है। लेट मी टेल यू दिस, इंटरव्यू को भी तो एक देते हुए इंटरव्यू मजा आ रहा होता है ना, तो थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बात कि कायदे आजम की मैंने जिना वाली किताब में बार बार, इससे पहले ही शुरू हो गया था कि ये सिख को कह रहे थे कि हमारे साथ आ जाए, दुरुस्त। मगर हुआ क्या, देखिए मार्च सिखों के अंदर भी दो ओपिनियन तो थे ना, यानी ज्ञानी करतार सिंह और ये लोग जो इधर ही के थे, उनका ख्याल था कि यार पाकिस्तान से अगर कोई समझौता हो जाए और हमारी सारी सेक्रेट वो हैं, साइट्स भी यहाँ पे हैं, श्राइन्स भी यहाँ पे हैं, तो व्हाई नॉट, ठीक है। और एक था कि नहीं नहीं, यहाँ पे अगर वो एक मुसलमानों की मेजोरिटी की स्टेट बनी तो जिस तरह सिखों का परसिक्यूशन मुगलों ने किया है, हालांकि मुगलों की भी स्टोरी कुछ परसिक्यूशन की है, कुछ बेनेवलेंस की भी है, मगर आप अपनी स्टोरी को वैसे ही याद रखते हैं ना जो आपका अपना नैरेटिव है। और औरंगजेब ने काफी ज्यादती की थी। हाँ, कोई ना, आखिरी का जो दौर है वो अलग। तो ये दो ओपिनियन तब भी थी। 6 तारीख, मैंने तो डेट भी दी है, को रावलपिंडी शहर में फायरिंग हुई मुसलमानों की तरफ से और उधर हिंदू सिखों, और दोनों का पल्ला एक जैसे ही था, बल्कि क्योंकि उनके पास आर्म्स ज्यादा थे तो उनका थोड़ा सा शहर के अंदर ज्यादा जोर था, और मेजोरिटी भी थी रावलपिंडी शहर में, बाय द वे। डिस्ट्रिक्ट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट 80% मुसलमान था, लेकिन रावलपिंडी शहर में सिखों और हिंदुओं की 64% पॉपुलेशन थी। तो कई फैक्टर्स थे कि उनके हक में जा रहा था। किसने ये फैसला किया, कैसे ये हुआ? 6 की शाम को जब डिंग डोंग बैठी ना, इधर जीत गए उधर हार गए, तो इन्होंने फैसला किया कि यहाँ से निकल जाओ, और जो गांव है सिखों के, वहां पे ज्यादा सिख थे, हिंदू जो थे वो माइनॉरिटी, यानी इकोनॉमिक उनके पास वेल्थ नहीं थी, सिखों के पास ही थी। उन गांवों को इन्होंने अपना सराउंड करके और ठीक ठाक, क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज किलिंग की है। सिखों की सोर्सेस तो 10,000 कहते हैं, और अंग्रेजों ने जो अकाउंट दिया, और पुलिस वाले आपको पता है आज भी अपने इलाके में जो होता है कम फिगर्स देते हैं ताकि उनकी फिर वो सुनाई ना हो जाए कि ये तुमने क्या किया। तो वो ऑफिशियल फिगर्स में हल पहले हैं 2004, उसके बाद 3000 तक वो चले गए थे ब्रिटिश फोर्स। हाँ जी, मेरे ख्याल से एनीवेयर बिटवीन 5 to 7,000 इन्होंने मार दिए, मेनली सिख, और उसमें दो हिंदू भी उन्हीं गांव में रहते थे। वहां से फिर जो सिख खानदान बच के गए हैं, उन्होंने पटियाला में जाके फिर पूरे उसके बाद तैयारी हुई है कि अगर दोबारा ये मुसलमानों के साथ हुआ तो हम अपना बदला खूब लेंगे। तो मार्च में जब ये हुआ है, बात ये हो रही है, जिन्ना साहब का एक बयान नहीं है पब्लिक, लियाकत अली खान का कोई बयान नहीं है, पंजाब के जो हेड थे मुस्लिम लीग के नवाब ममडोट, उनका कोई बयान नहीं है सिंपथी का, किसी मुस्लिम लीग का कोई बयान नहीं है कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है और पाकिस्तान में हम ये कत्ल नहीं होने देंगे। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि व्हाई डिड दे नॉट मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, और सिखों को उनका कम से कम कोशिश तो करते ना, कि ज्ञानी करतार सिंह जैसे लोग जो थे, जो आ रहे थे इनके साथ, हाँ जी, वो वाला पल्ला भारी हो जाता।
तब तो ये रहे चुप। लेकिन जब उसकी वजह क्या है कि तब तक जिन्ना साहब वाज बिलीविंग पूरा पंजाब तो मिलना ही मुझे है। वो तो जब मई में बात शुरू हुई है कि नहीं इंडिया पार्टीशन होगा तो पंजाब और बंगाल भी होंगे, तब इन्हें समझ आई कि अब कुछ किया जाए, बट इट वाज टू लेट।